This is the screen, right? I hope it's visible. So let's start. Photosynthesis. The process is photosynthesis. What do you mean by photosynthesis? This one. Photosynthesis means the process by which green plants prepare their food in their body. We will read each and every topic in detail. Okay, let's begin. Warm up. It's an introduction type. So let us first read what is the meaning of photosynthesis. It is a Greek word. Here you can see it is a Greek word. Photosynthesis comes from the Greek word, that is, first one is photo, first word is photo, and the second word is synthesis. These two words combinedly form photosynthesis. The meaning of photo is light, and the meaning of synthesis is composition. Okay, तो photosynthesis जो word है, ये पूरा जो word है, it is divided into two parts. The first one is photo, जिसका मतलब होता है light. Okay, and the second है synthesis. Synthesis मतलब combine करना, किसी चीज को जोड़ना. अब फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगा? प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर होगा. Plants and other photosynthetic organisms link molecules together into useful forms using photosynthesis. So many plants use this. Photosynthetic organism का मतलब होता है ऐसा organism जो photosynthesis process को perform करता है. The organism which performs photosynthesis is known as photosynthetic organism. Okay? तो ये एक ग्रीक वर्ड है एंड इसका दो वर्ड में डिवाइडेड है. फर्स्ट है फोटो, जिसका मतलब है लाइट, एंड सिंथेसिस मींस टू कंबाइन, दैट इज कॉम्पोजिशन. ओके, इट इज अ ग्रीक वर्ड, आई रिपीट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट. What is photosynthesis? Let us study what do you mean by photosynthesis, the process of photosynthesis. Okay, let's start. What is photosynthesis? इट इज द प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस एक पूरा प्रोसेस है, एक लाइन ऑफ सीरीज है कि किसके बाद क्या होगा. ठीक है, कौन सा प्रोसेस, कौन सा स्टेप फर्स्ट होगा, देन सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसा बहुत सारा स्टेप्स मिला के फोटोसिंथेसिस बनते हैं. सो इट इज द प्रोसेस by which green plants, only and only green plants, mark the word here, it is green plants. Only green plants and some other organisms use sunlight to synthesize food from carbon dioxide and water. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स, ओनली एंड ओनली ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड. एंड इस प्रोसेस में चार चीजें यूज होती है. द फर्स्ट वन इज सनलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट. सनलाइट यूज होता है. नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो यूज इन दिस प्रोसेस. Next, water is also used, and the fourth one is chlorophyll. I have marked all the four raw materials with the purple highlighter. Okay, so chlorophyll, water, carbon dioxide, and sunlight. These four are the main raw materials needed for the process of photosynthesis. Okay, it is the process by which green plants prepare their food using sunlight, carbon dioxide, water, and chlorophyll. Let us understand each one of the raw materials in detail, which is needed. Okay, and generates oxygen as a byproduct. Oxygen is the byproduct, मतलब result है. Oxygen result है कि ये चारों चीज को कंबाइन करोगे तो फूड तो बनेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? फूड बनाना. तो फूड
तो बनेगा ही बनेगा, फूड के साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज होगा एज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन. So let us read all these in details, all the raw materials needed in details. Okay, let's start. Okay, so the first one comes, first question arises is, what do we need? What do plants need for photosynthesis? Plants ही photosynthesis perform करेंगे, humans तो नहीं कर सकते. Only green plants, right? So what do plants need for photosynthesis? Plants को क्या चाहिए photosynthesis perform करने के लिए? Plants के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, right? So need, the need of the plants. अब जैसे अगर plants, they make food, right, in their own body using four raw materials which I have said in the last slide. Okay, so as humans we also prepare food outside of our body, right? तो हम क्या करते हैं, हमें जैसे कि कोई वेजिटेबल, वी नीड टू प्रिपेयर एनी वेजिटेबल. ओके, we first need the vegetable, we will need spices, we will need gas, okay, heat, in the form of heat, right? Also water. So we also need many types of raw materials for making food. So accordingly ऐसा ही प्लांट्स के साथ भी होता है, प्लांट्स को भी कुछ कुछ चीजें चाहिए होता है ताकि वो फूड प्रिपेयर कर सके. So what is the need of the plants to prepare food, right? Photosynthesis में ही तो food prepare होता है, okay? तो photosynthesis में plants को क्या चाहिए? Which is the raw material, or which are the ingredients which is important for the process of photosynthesis? So let us study each one by detail. The first one comes here is chlorophyll. Okay, the first one is chlorophyll. Okay, let's start with this. Let me mark it with green. Oh, the first is chlorophyll. Okay, so what do the plants need for photosynthesis? First is chlorophyll. Chlorophyll, I've marked it with green because it is a green color pigment. Okay, it is present in the leaves. Chlorophyll कहाँ present है? Leaves में. And उसका color है green. So I thought to mark it with green, due to the presence of pigment called chlorophyll. तो leaves का color green क्यों है? क्योंकि उसमें chlorophyll present है. Okay, the leaves are green due to the presence of pigment chlorophyll. It helps the leaves to capture sunlight. Chlorophyll का work क्या है? To capture solar energy or sunlight. So the leaves are green in color due to chlorophyll. Chlorophyll का color क्या है? Green, right? The color of the chlorophyll is green. Okay. तो उसका वर्क, द वर्क ऑफ क्लोरोफिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज टू कैप्चर सोलर एनर्जी. अब लीव्स में क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, तो वो सनलाइट कैसे लाएगा? सनलाइट भी तो बाहर से लाना है प्लांट को. तो सनलाइट विल बी कैप्चर्ड बाय द पिगमेंटस दैट इज क्लोरोफिल. ओके, सनलाइट मिलेगा क्लोरोफिल के थ्रू. This energy is used to prepare food from carbon dioxide and water. These are the other two raw materials which is discussed here. तो अगर क्लोरोफिल देखें, तो क्लोरोफिल के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि सनलाइट कैप्चर हो पाए. फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल रहेगा तभी सनलाइट कैप्चर कर पाएगा. ओके, विच इज, दैट इज सनलाइट. It's our next topic, like next raw material needed for photosynthesis. Sunlight. Okay, sunlight, I'll mark that with yellow. सनलाइट. ओके, सनलाइट कहाँ से आता है? अभी हम पढ़े क्लोरोफिल से आता है.
क्लोरोफिल से सनलाइट एब्जॉर्ब होता है। सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का था, तो वो ग्रीन कलर का जो केमिकल था, जो पिगमेंट था, जो लिक्विड था लीव्स में, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या कैप्चर करता है? सनलाइट। तो अब लीव्स के पास क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट था। जो हमारा फर्स्ट रॉ मटेरियल है क्लोरोफिल, दैट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लीव्स। अब नेक्स्ट रॉ मटेरियल दैट इज सनलाइट कहाँ से आया? क्लोरोफिल कैप्चर कर लिया, तो लीव्स के पास सनलाइट पहुंच गया। अब सनलाइट का नीड क्या है? इट इज यूज्ड टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स में से अलग कर देगा। इट विल स्प्लिट देम। We will read that in chemical equation in our next topic. Okay. तो सनलाइट क्या है? सनलाइट मिल गया सन से। इट्स द पिक्चर ऑल्सो द पिक्चर ऑफ द सन। सन प्रोवाइड सनलाइट, राइट? तो सनलाइट मिल गया लीव्स को। तो द फर्स्ट रॉ मटेरियल क्लोरोफिल ग्रीन कलर का, वो तो रहता ही है लीव्स में। एंड नेक्स्ट सनलाइट इज ऑल्सो कैप्चर्ड थ्रू क्लोरोफिल। Let us see our next one, which is water. Okay, we will read about water now. अब लीव्स के पास क्लोरोफिल ऑलरेडी है, सनलाइट भी मिल गया क्लोरोफिल के थ्रू। अब वाटर कैसे पहुंचेगा? वाटर तो यहाँ प्रेजेंट रहता है रूट्स के पास। अब हमें उसको लेके जाना है यहाँ लीव्स तक। तो ये वाटर यहाँ से इधर कैसे जाएगा? Let us see. Water is absorbed by the roots. Okay, as I said, water is present in the roots here. Here, water molecules are present in the roots and passes through vessels in the stem on its way to the leaves. Okay, तो water molecules क्या होगा? पहले सबसे first तो वो यहाँ पे रहेगा. Water molecules will be here near the roots. Okay, अब ये water molecules stem के through it will go and then it will reach the leaves. It will then reach the leaves here. पहले root के पास रहेगा water molecules and then through the vessels in the stem. Stem में vessels होगा, बहुत सारा vessels होगा stem में. So it will reach through these vessels to the leaves. Different leaves तक वो जाएगा ये vessels के through. Okay, stem में जो vessels है उसके through the water molecules will reach the leaves. तो अब leaves के पास क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट था, क्लोरोफिल से सनलाइट मिल गया एंड अब वाटर मॉलिक्यूल्स भी रूट से चले गया लीव्स तक. एंड नेक्स्ट कम्स आवर लास्ट वन, दैट इज carbon dioxide, right? Okay, let's see about the fourth raw material also. So carbon dioxide. Carbon dioxide is the fourth raw material. Carbon dioxide is the fourth raw material. It is present in the air. See, carbon dioxide is present in the air. Carbon dioxide present in the air. Carbon dioxide from the air passes through small pores in the leaves and these pores are called stomata. Okay. तो कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो यहाँ पे लीव्स में से, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है लीव्स के पास, कैसे जाएगा? थ्रू एयर. ये एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एंड वहां से वो लीव्स तक ट्रैवल करेगा थ्रू स्टोमाटा. अब लीव्स में ना स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं लाइक दिस. ओके, तो लीव्स में स्मॉल स्मॉल होल्स रहते हैं. लेट मी मेक इट. Any leaf, any type of leaf, there are small pores. Okay, small pores meaning holes. There are very minute holes. Minute मतलब small. तो लीव्स में बहुत सारा स्मॉल होल्स रहता है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स. कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में कैसे जाता है? थ्रू दिस होल्स. ये लीव्स में जाता है ये होल्स के थ्रू. सो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट रहता है, वी हैव जस्ट रेड. तब एयर से कार्बन डाइऑक्साइड चले गया लीव्स के पास. ओके,
So all the four materials are discussed here. Namely, the first one was, what do we need, right? We need, first was chlorophyll. Chlorophyll leaves में present था. Second, sunlight. Chlorophyll के through मिल गया. Third one is water. Roots में present था और stem में जो vessel है उसके through leaves तक पहुंच गया. एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में जो स्टोमाटा है ना, स्टोमाटा स्मॉल स्मॉल होल स्मॉल पोर्स, वो स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया लीव्स के पास. अब नाउ वी हैव ऑल दीज फोर मटेरियल्स, 1 2 3 and 4, all these four materials are the four raw material for photosynthesis. Ab we have all these and now the process of photosynthesis can be easily performed. So next one is, what are the products, what are the byproducts of photosynthesis? चारों मटेरियल तो मिल गए. अब वो मटेरियल मिक्स करके क्या बनाएंगे? द फर्स्ट इज, हमें फूड बनाना था. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था फोटोसिंथेसिस से? वी हैड टू मेक फूड. So the first is glucose. The name of the food is glucose, right? And extra में क्या रिलीज हो गया? ऑक्सीजन. Extra में oxygen is released into the air. Okay, I'll make the sign here. The upper arrow, up arrow. So oxygen is released in the air as it is a byproduct. वो एक extra product है plant के लिए. So let's see क्या क्या products है. Products of photosynthesis. The products of photosynthesis are two in number. Which are those? The first one is glucose and the second is oxygen. तो फोटोसिंथेसिस का दो प्रोडक्ट्स है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ग्लूकोज क्या है? फूड. आई हैव जस्ट सेड दिस ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ फूड. वी हैव रेड फोटोसिंथेसिस में फूड चाहिए एंड ऑक्सीजन इज द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फूड से हमें एनर्जी मिलेगा, दैट इज ग्लूकोज. ग्लूकोज गिव्स एनर्जी एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. अब प्लांट के लिए तो ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है. क्यों? बिकॉज प्लांट को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, प्लांट को ऑक्सीजन नहीं चाहिए. तो प्लांट के लिए ऑक्सीजन हो गया वेस्ट प्रोडक्ट, बिकॉज प्लांट डू नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर दैट, राइट? On the other hand, we as human beings or any other living being needs oxygen to breathe. तो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रीशियस है, बट हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है. But now photosynthesis can only be performed by green colored plants. So they need carbon dioxide. उनके लिए ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो ऑक्सीजन वो लोग रिलीज कर देते हैं. They release oxygen into the air as the waste product. So these are the byproduct of the process of photosynthesis. Photosynthesis का byproduct मतलब चार चीजें मिलाए, that is sunlight, chlorophyll, water, carbon dioxide. We have mixed those four, we have combined to form two products, that is oxygen and glue. So this is the whole process. Now we will understand this in the form of equation. That is, first one is the word equation and second symbol equation. Okay. So what is the meaning of word equation? Word equation मतलब आप लोग जितना भी हमारा प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट्स हो गया, या फिर जितना रॉ मटेरियल है हमारे पास जिसको हम कंबाइन कर रहे हैं, हम सबको स्पेलिंग के फॉर्म में लिखेंगे, सबको स्पेलिंग लिखेंगे. We will write in the form of spelling. Okay. In form of words, we will use letters and we will form words. So this is known as word equation. And symbol equation में क्या होता है? हम वही word के लिए symbol use करते हैं. So let us study first the word equation. Okay, let's start. Word equation में सबसे first है carbon dioxide. I have just told four raw materials are needed. The first one is carbon dioxide. Second, water. Third, sunlight. लाइट लिखा है, लाइट किस फॉर्म में चाहिए? सनलाइट के फॉर्म में. एंड फोर्थ, क्लोरोफिल.
ये चारों रॉ मटेरियल को अगर हम कंबाइन करेंगे, इफ वी विल कंबाइन दिस एज फोटो मतलब लाइट, तो लाइट चाहिए, सिंथेसिस मीन्स कंबाइन, राइट? तो कंबाइन करेंगे अगर ये चारों को, सो वी विल गेट द प्रोडक्ट, एंड द प्रोडक्ट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन द एयर. Okay, so this is the word equation. This is the total word equation for the photosynthesis process. अब इसी को अगर हम सिंबल के फॉर्म में लिख रहे हैं, जिसमें हम लेटर्स यूज कर रहे हैं, ओनली द लेटर्स एंड द नंबर्स, तो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2. यहाँ वाटर था, वाटर को क्या लिखते हैं? H2O. वी राइट वाटर एज H2O. लाइट सेम एज इट इज सनलाइट के फॉर्म में. नेक्स्ट है क्लोरोफिल. ओके, क्लोरोफिल हो गया. नेक्स्ट, ये चारों चीजों को जब हम कंबाइन करेंगे, सेम सेम चीज हो गया. इफ वी कंबाइन ऑल दीज, oh let me do this, chlorophyll, right? So if we combine carbon dioxide as CO2, water as H2O, light as it is, chlorophyll is also as it is. If we combine all these four, the same result is same, but in the form of symbols. ग्लूकोज को हम लिखते हैं C6H12O6. So this is the symbol for glucose. And oxygen, for oxygen it is O2. For oxygen it is O2. So this is total the word equation in the form of word or spellings, and then it is the symbol equation. We use symbols for this. So this is all about photosynthesis, the raw materials and the equations. Now let us study the next. Let's check what we have read till now. Questions. We will discuss. These are some of the important questions, frequently asked questions. So we will discuss these also. The first one. What is photosynthesis? Just read. What is photosynthesis? The process by which green plants, only the green plants, prepare food in their body. Okay, the process by which green plants prepare food in their body is known as photosynthesis. Here, the first question, photosynthesis का मीनिंग क्या है? तो photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं अपने बॉडी में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मेन रॉ मटेरियल्स क्या क्या था? पहला चाहिए क्लोरोफिल, चाहिए प्लांट को. सेकेंड, सनलाइट भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एंड वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. So these are the 4 main raw materials. 4 raw materials पूछा है ना? This is the question. 4 main raw materials कौन कौन सा? सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. So these are the 4 raw materials. Next question, what is the role of chlorophyll in photosynthesis? क्लोरोफिल का काम क्या है? चलो हमने बोल दिया 4 रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें क्लोरोफिल का काम क्या है? The role of chlorophyll is to capture sunlight. हमें सनलाइट भी चाहिए. देयर आर द 4 रॉ मटेरियल्स, राइट? तो सनलाइट इज आल्सो नीडेड. सनलाइट कहाँ से आएगा? क्लोरोफिल कैप्चर करेगा. इसीलिए क्लोरोफिल इज आल्सो इम्पोर्टेंट, सनलाइट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. See, the process of photosynthesis is not completed जब तक चारों चीजें ना मिल जाए. सो क्लोरोफिल का काम क्या है? रोल क्या है? रोल ऑफ क्लोरोफिल है कि वो सनलाइट को कैप्चर करेगा. ओके, नेक्स्ट इज, व्हाई इज सनलाइट इंपॉर्टेंट? सनलाइट क्यों इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए? क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म नहीं हो सकता. सनलाइट नहीं होगा तो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड नहीं हो पाएगा. ओके, तो सनलाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड carbon dioxide. These are the 4 main raw materials, right? These 4 are needed and they are very much important.
Okay. And the last one is, what are the products of photosynthesis? Photosynthesis का product क्या है? अब process तो हो गया complete. चार चीजें मिल गया. The four main raw materials is discussed here. See here. The four main raw materials we know it. तो इसका product क्या निकलेगा? Of course food. Photosynthesis तो हम food के लिए ही कर रहे हैं. We have read plants क्यों करते हैं photosynthesis? To prepare food in their body, right? So product क्या है photosynthesis का? The product is glucose in the form of food, and extra product एक था, that is oxygen. So product for photosynthesis is glucose and oxygen. Okay. So here the questions end, and let us now recap shortly what we have read in the class. Okay. Warm up the word photo and synthesis. Photo meaning light, synthesis means to combine, that is composition. Photosynthesis क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं अपने बॉडी में फूड. दे प्रिपेयर फूड. ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर ओन बॉडी. एंड उसका नीड क्या है? द फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल. द नीड इज क्लोरोफिल. फर्स्ट रॉ मटेरियल क्लोरोफिल है. उसका काम है टू कैप्चर सनलाइट और सोलर एनर्जी. नेक्स्ट, सनलाइट. सनलाइट कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द सन. एंड एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? क्लोरोफिल. तो सनलाइट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. उसका वर्क क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स को अलग करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में करेगा. देखो ये मैं बताती हूँ. सनलाइट, सी हियर, यहाँ पे है वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके. एंड हियर सनलाइट इज यूज. ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अलग करेगा. हाइड्रोजन ग्लूकोज में जाएगा, एंड जो ऑक्सीजन है वाटर मॉलिक्यूल का वो रिलीज होगा एयर में. ठीक है. सो दैट इज वाई सनलाइट इज इंपॉर्टेंट, कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस वाटर मॉलिक्यूल से अलग अलग करके ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज करवा सके. ठीक है. ओके. सनलाइट. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर इज इंपॉर्टेंट. इट इज प्रेजेंट इन द रूट्स. यहाँ पे फिर वो स्टेम में वेसल्स के थ्रू लीव्स तक पहुंचेगा. एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इट विल गो इनटू द लीव्स थ्रू स्टोमाटा. So these are the four main raw materials, and the byproduct जो हमें मिलेगा after the photosynthesis, after the plants do photosynthesis, two main materials will be released. First is oxygen and second is glucose. ये दोनों materials आएगा. ग्लूकोज है फूड का नाम. वो जो फूड प्रिपेयर किया है दैट इज ग्लूकोज. दिस इज द वर्ड इक्वेशन जिसमें स्पेलिंग के फॉर्म में लिखना है. ओके. एंड दिस इज द सिंबल इक्वेशन और द केमिकल इक्वेशन जिसमें सिंबल्स के फॉर्म में लिखा गया. These are some of the important questions that I have discussed in the class. Thank you so much everyone for listening, and I hope this topic of photosynthesis is clear to all of you. Thank you so much. Thank you, sir.